problems today. Problems from all the different chapters we are taking together. We are given f and g are two functions such that gx is x minus 1 by x and f of gx is x cube minus 1 by x cube. We want f dash x. Now to find f dash x, first we'll have to find fx. So what we must do is, ये f of gx है, alright, तो इसको भी मैं gx के टर्म्स में कन्वर्ट कर दूंगा. तो हमको इसका फैक्टर्स क्या आएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मूला से. This is like a cube minus b cube. The factors are a minus b, a square plus ab plus b square. This is now, this will become a minus b, a square plus ab plus b square. Alright, and ये यहाँ पे 1 आएगा, हमको 1 के बदले -2 चाहिए, सो दैट ये जो है, ये 1 के बदले मैंने 3 - 2 लिखा. दिस इज नाउ दिस इज व्हाट इज gx, x माइनस 1 बाई x. तो इसको मैंने फैक्टराइज किया a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मूला से, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर. अब ये जो टर्म है ये तो gx में कन्वर्ट हो गया. इसको gx में कन्वर्ट करने के लिए इधर ये 1 के बदले, ये 1 के बदले 3 - 2 लिखेंगे, और ये नाउ आई विल रिप्लेस gx बाई x, रिप्लेस gx बाई x. हमको f of x will become x times x square plus 3, that is x cube plus 3x. So f dash x will be 3x square plus 3 is the answer. Normally if fx is x cube plus 3x and gx is x minus 1 by x, then what will be f of gx? It will be gx the whole cube plus 3 times gx. अगर ये fx है और ये gx है, ये हमारा रेगुलर क्वेश्चन है, ये fx ये gx, तो ये f of gx हो जाएगा. इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो ये आंसर आएगा. सो हियर वी आर डूइंग द रिवर्स प्रोसीजर. दिस इज नोन, fx मालूम है, gx मालूम है, और अगर f of gx चाहिए तो जहां x है वहां gx. यहां पे f of gx दिया हुआ है, वो gx के टर्म्स में है. हमको चाहिए f of x, क्योंकि f dash x निकालने के लिए fx निकालना पड़ेगा. तो रिप्लेस gx बाई x, आंसर आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3. इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आ जाएगा.
this is the formula for integral as the limit of sum. Integral a to b fx dx is limit n tends to infinity 1 by n and r equal to 1 to n f of a plus r upon n. अब इसमें put a equal to 0 and b equal to 1, तो क्या होगा? 0 to 1 fx dx will become limit n tends to infinity 1 by n sigma r equal to 1 to n f of 0 plus r upon n. a के बदले 0 लिखेंगे and r upon n. What is 0 plus r upon n? Will become f of r upon n. a के जगह पे 0 लिखेंगे. यहाँ पे ये f ऑफ r बाई n मालूम होगा तो हमको f ऑफ x मिल जाएगा. r बाई n के बदले x लिखेंगे तो f ऑफ x मिल जाएगा. ऑलराइट, तो जब भी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी दिया होगा, आगे 1 बाई n होगा, अंदर सिग्मा नोटेशन होगा एंड फंक्शन ऑफ r बाई n होगा, तो ये जो इंटीग्रल है, ये जो लिमिट है, दैट इज सेम एज दिस इंटीग्रल. अब अगर अपर लिमिट n होगा ना, तो यहां पे अपर लिमिट n होगा तो 1 आएगा. अगर यहां पे अपर लिमिट 2n होगा तो 2 आएगा. 3n होगा तो 3 आएगा. यहां पे ये नोट किया जाए, दिस इज, ये n होगा तो अपर लिमिट 1 आएगा. अगर 2n होगा तो 2 आएगा. ऑलराइट, नाउ वी आर डूइंग दिस प्रॉब्लम. This is question number 2. We have to calculate the value of this limit. Limit n tends to infinity 1 by n sigma r equal to 1 to 2n r upon root of n square plus r square. अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, 1 बाई n है, लेकिन अंदर फंक्शन ऑफ r बाई n होना चाहिए. वो लाने के लिए n स्क्वायर कॉमन ले लो डिनोमिनेटर से, रूट के अंदर से. ये n स्क्वायर जब बाहर निकालेंगे तो n आ जाएगा. n स्क्वायर जब रूट के बाहर निकालेंगे तो n आएगा और इधर 1 आएगा, इधर r बाई n का स्क्वायर होगा. दिस इज नाउ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n sigma r equal to 1 to 2n r by n 1 plus r by n the whole square. ये r upon n को साथ में ले लिया और इधर r square by n square को r by n का स्क्वायर लिखा. This is now entirely depending on r by n only. This is f of r by n. What is f of r by n here? It is what is f of r by n? It is r by n upon root of 1 plus r by n the whole square. So what will be f of x? r by n के बदले x लिख दो, x upon, yes, understood. तो हमको ये फंक्शन मिल गया. अगर अपर लिमिट n होगा तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे अपर लिमिट 2 है, 2n है, तो अपर लिमिट 2 आएगा. सो ये इंटीग्रल होगा 0 to 2 fx dx, that is 0 to 2 x upon, we'll multiply and divide by 2. This is now what form? F dash x upon root fx. आंसर आएगा 2 root fx. From 0 to 2, 2 and 2 get cancelled. पहले 2 डाल देंगे तो √5 आएगा एंड √1. आंसर आएगा √5 minus 1. अभी ये याद रखेंगे, जब भी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा
आगे 1/n होगा और अंदर फंक्शन ऑफ r/n होगा, तो ये लिमिट को ये इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने 12th में ये इंटीग्रल को लिमिट में कन्वर्ट करना सीखा है, यहां पे लिमिट को इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, आगे होना चाहिए 1/n और अंदर होना चाहिए फंक्शन ऑफ r/n, देन वी कैन डू दिस। Third, we are given in triangle ABC A equal to 4, B equal to 3 and angle A equal to 60. We have to then C is a root of, we are given the options, we have to find C is a root of which equation. We use the formula for cos A by cosine rule. We know value of A, value of small b and small a. So we'll get a relation. Cos of 60 is equal to b square will be 9. C square as it is minus 16 upon 2 into 3 into C. We know cos 60 is half is equal to C square minus 7 upon 2 into 3C. 2 gets cancelled. So 3C is equal to C square minus 7. तो आएगा C square minus 3C minus 7 is equal to 0. So C is a root of this equation. We have to make use of the cosine rule. We are knowing angle, side A, side B and angle A. So we have to use cos A. We'll get the value of C. If I use quadratic formula, I'll get the value of C. लेकिन वो नहीं पूछा है, पूछा है C is a root of equation. Number 4. We are given area bounded by y square is equal to 4ax and y is equal to mx is a square by 3. Now by synopsis we know area bounded by y square equal to 4ax and y equal to mx is 8a square upon 3m cube. By synopsis we know area bounded by the horizontal parabola and line passing through origin is 8a square upon 3m cube. And this is given to be a square by 3. So a square cancels, 3 cancels. तो आएगा 8 is equal to m cube. So m cube equal to 2 cube. So m is equal to 2 is the answer. सिर्फ ये मालूम होना चाहिए that area bounded by y square equal to 4ax and y equal to mx is 8a square upon 3m cube. Fifth, we have to calculate the value of this integral 0 to pi by 2 sin raised to 100x minus cos raised to 100x dx. This we'll call it as equation 1. Now this looks like a very complicated problem, but it is very easy. Just we don't have any formula for this. Let us apply property 5. क्या होगा प्रॉपर्टी 5 अप्लाई करेंगे तो प्रॉपर्टी 5 क्या है, जहां पे 0 to a fx dx becomes 0 to a f of a minus x dx. जहां x है वहां a minus x, तो यहां पे आएगा sin 90 minus x, तो बनेगा cos x raised to 100 minus sin x raised to 100. ये साइन का कॉस हो जाएगा और कॉस का साइन, क्योंकि जहां x है वहां 90 माइनस एक्स आएगा, तो साइन 90 माइनस एक्स बिकम्स कॉस एक्स एंड कॉस 90 माइनस एक्स बिकम्स साइन एक्स. वी ऐड 1 and 2, क्या होगा 2i विल बिकम
ये ऐड करेंगे तो 0 to pi by 2, 0 dx, ये साइन वाला टर्म कैंसिल, कॉस वाला टर्म कैंसिल, 2i equal to 0, therefore I equal to 0, 0 is the answer. Next, question 6. -1 to 1 mod x plus 2 upon x plus 2 dx. Limits are between -1 to 1. So -1 less than x less than 1. हमको x plus 2 चाहिए तो I'll add 2 on all sides. I'll add 2 on all sides. तो आएगा 1 greater than x plus 2 greater than 3 means x plus 2 is greater than 0. It is between 1 and 3 means it is greater than 0. Because it is greater than 0, mod x plus 2 का वैल्यू x plus 2 आएगा. तो इंटीग्रल mod x plus 2 के बदले x plus 2 लिखेंगे. ये कैंसिल होके आएगा 1. 1 का इंटीग्रेशन होगा x फ्रॉम -1 to 1. तो 1 plus 1 2 is the answer. ये प्रॉब्लम में ये मॉड्यूलस जो दिया है that is just to make a fool out of you. ये मॉड्यूलस का कुछ यूज नहीं है क्योंकि वैल्यू will remain the same because it is greater than 0. Because it is greater than 0. When you know when a is greater than 0, then mod a equal to a. Next, question 7. Five boys and 5 girls are to be seated in a row. Therefore, it is arrangement. Means it is a problem of permutation. 5 girls and 5 boys, that is 10%, so 10p10, which will be 10 factorial. Now we say let A be the event that boys and girls sit alternately. Means first boy, then girl, 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 or girl, boy, girl, boy, girl, boy, girl, boy, girl, boy. Boys and girls sit alternatively. How many places for boys? 5. And how many places for girls? And again 5. There are 5 boys and 5 places to be filled, so 5p5, and 5 girls and 5 places to be filled, so again 5p5. So NA will be equal to 5p5 into 5p5. This is for this arrangement. Similarly, we'll get again 5p5 into 5p5 means multiplied by 2. अगर ये M है, this is 5p5 into 5p5, this is M, then this is also M only, because again 5 places for girls and 5 places for boys. Alright, so the arrangement can have boy girl boy girl boy girl 5 times, or girl boy girl boy girl boy 5 times. So this will become 5 factorial into 5 factorial into 2. This is NA. So what will be PA? NA upon NS. That is 5, 4, 3, 2, 1 into 5 factorial
इंटू 2, ये 5 फैक्टोरियल को एक्सपांड कर दिया, ये 5 फैक्टोरियल एज इट इज रखा, 2 एज इट इज रखा, और नीचे 10 फैक्टोरियल को लिखूंगा मैं 10, 9, 8, 7, 6 into 5 factorial. 5 factorial gets cancelled. 5 2s are 10 will cancel with 10. 4 and 8 will cancel to give you 2. 2 and 2 get cancelled. Then 3 and 9 will cancel to give you 3. Answer आएगा 1 upon 126. Answer आएगा 1 upon 126. Probability of A will be 1 upon 126. Question 8. We are given this pair of lines 8x square plus 8xy plus 2y square plus 26x plus 13y plus 15 equal to 0. These are given to be parallel pair of lines. So we can calculate the value of A will be 8, H will be 4, B will be 2, then G will be 13, F will be 13 by 2 and C will be 15. Now distance between parallel pair of lines is given by this formula 2 times G square minus AB upon A times A plus B. Formula is G square minus AC. In fact, G square minus AC 2 times root of G square minus AC upon A into A plus B. That is G square. What is G? 13. So 13 ka square minus A into C. That is 8 into 15 divided by A is 8 and A plus B will be 8 plus 2. So this will be 2 times 169 minus 120 upon 8 into 10. That is 2 times 49 upon 80. That is 2 times 49 is 7 divided by root 80 is 4 root 5. 4 and 2 will cancel to give you 2. Answer आएगा 7 upon 2 root 5. The distance between parallel pair of lines is given by this formula. Distance between parallel pair of lines is given by this formula. क्या है formula? 2 root of G square minus AC upon A into A plus B. Distance between parallel pair of lines is given by this formula. 2 root of G square minus AC upon A into A plus B. Next, question number 9. Question 9. Fx is mod of x minus 2. Then which of the following is correct? The options given are A is periodic, B f of x plus y is f of x plus f of y.
f is an odd function and d, f is not one-to-one function. For two values of x, we get one value of fx. Or we can understand it this way. Fx will be x minus 2 if x is greater than 2 and 2 minus x if x is less than 2. ऑलराइट, तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, ऐसा आएगा ग्राफ. ग्रेटर देन 2 के लिए x माइनस 2 आएगा और लेस देन 2 के लिए 2 माइनस x आएगा. अगर हमने एक वैल्यू ऑफ x लिया, एक वैल्यू ऑफ x, दिस इज से फॉर वन वैल्यू ऑफ y, सपोज y इज 1, ऑलराइट, y का वैल्यू सपोज हमने 1 लिया, इधर 1 डालो, ऑलराइट, तो x का दो वैल्यूज मिलेगा. अगर y इक्वल टू 1 लिखेंगे तो x का दो वैल्यूज मिलेगा. This is for one value of y. Suppose y is 3. Alright, ये fx 3 है. fx अगर 3 है तो plus or minus 3 will become x minus 2. So either x will be 5 or x will be minus 1. So, for two values of x, we are going to get one value of y. For two values of x, we are going to get one value of y. यहाँ पे x minus 1 होगा या x 5 होगा. fx is y. तो ये y equal to 3 means fx equal to 3. तो ये 3 होगा, मॉड x माइनस 2 आएगा, उसको प्लस और माइनस लेंगे तो एक x का वैल्यू आएगा 5 और दूसरा x का वैल्यू आएगा माइनस 1. तो पॉइंट बनेगा माइनस 1, 3, 5, 3. मीन्स फॉर वन वैल्यू ऑफ y you are getting two values of x. In other words, for two values of x we'll get one value of y. Alright, x जब 5 होगा तो आंसर y का 3 आएगा और x जब माइनस 1 होगा तभी भी आंसर 3 आएगा. मीन्स f is many to one type of function. ये स्लोप 1 है तो पॉजिटिव स्लोप वाला लाइन इधर आएगा और ये माइनस 1 है तो नेगेटिव स्लोप वाला लाइन ऐसे आएगा. तो ये लाइन है y इक्वल टू 2 माइनस एक्स और ये लाइन है y इक्वल टू x माइनस 2. और यहां पे इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ किया तो सेम वैल्यू ऑफ y आएगा. ऑलराइट, y इक्वल टू 3 लिया, ऑलराइट, इधर 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x 5 आएगा और इधर 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x माइनस 1 आएगा. सो फॉर
two values of x, we get one value of y. Means f is many to one type function. Means it is not one to one function. Answer D आएगा. बाकी सब ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं होगा. We know that modulus mod x is an even function. Mod of x is an even function. Alright? Mod x minus 2 even नहीं होगा. So ये गलत है. इसमें अगर x के बदले x प्लस y लिखेंगे तो वैल्यू सेम नहीं आएगा. Alright? और पीरियोडिक भी नहीं है ये. Alright? So आंसर आएगा f is not one to one function. It is many to one type of function. For two values of x, we are going to get the same value of y. Alright? That is why we say it is not a one to one function, it is a many to one type function. Question 10. P is the length of perpendicular from origin on the line which makes intercepts. X intercept 1 by 3 है और y intercept 1 by 4 है. We have to find the length of perpendicular from origin, means distance from origin. So the line equation will be x upon a plus y upon b equal to 1. That is x upon 1 by 3, y upon 1 by 4. That is 3x plus 4y minus 1 equal to 0. Distance from origin का formula है c upon under root a square plus b square. That is minus 1 upon root of 3 square plus 4 square. आंसर आएगा 1 upon 5. आंसर आएगा 1 upon 5. A circle touching x-axis at a distance 3 from origin and having an intercept of 2 root 7. This intercept is 2 root 7. ये डिस्टेंस 3 है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी 3 आएगा तो ये y कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा. ये डिस्टेंस 3 है तो ये डिस्टेंस भी 3 ही आएगा. ऑलराइट, ये डिस्टेंस 3 है तो ये भी 3 आएगा तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा. सॉरी, x कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा. डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज द x कोऑर्डिनेट. ऑलराइट. अच्छा, आपको लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला मालूम है. It is 2 root of f square minus c. This is 2 root 7 is root of f square minus c. So squaring f square minus c is equal to 7. पहली बात, सेंटर का x कोऑर्डिनेट 3 है. अभी ऑप्शंस जो है ना ये दिए है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x plus 8y minus 9. In fact, plus 9 equal to 0. Option B, x square plus y square minus 6x plus 7y plus 9 equal to 0. Option C, x square plus y square minus 6x minus 8y minus 9 equal to 0. And option D, x square plus y square minus 6x
minus 7y plus 9 equal to 0. Because circle touches the x-axis, the terms in x with constant forms a perfect square. तो ये अभी ऑब्जर्व करेंगे, इसमें ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है. ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, इसमें भी बन रहा है और इसमें भी बन रहा है. मतलब आंसर सी नहीं है. x square minus 6x plus 9 is x minus 3 the whole square. इधर भी x minus 3 the whole square आएगा. अब यहां से अब इसमें से g square निकालेंगे. I mean you will find out f and c. What is the value of f from here? f is 4 and c is 9. अब चेक करो ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या? f equal to 4 and c equal to 9. इसमें सब्स्टिट्यूट करो. 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 9 7 हो रहा है सेटिस्फाई. सो आंसर इज ऑप्शन ए. आंसर इज ऑप्शन ए. आपको इसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज द सर्कल इज टचिंग द एक्स एक्सिस. ऑलराइट, अदरवाइज ये एक्स कोऑर्डिनेट 3 है तो इक्वेशन में ये आएगा x minus 3 the whole square. You know the formula x minus h square y minus k square. So what will be the equation? X square minus 6x plus 9. X square minus 6x plus 9. Alright? इधर भी x square minus 6x plus 9. और यहाँ से ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा हमको. तो यहाँ पे 2f is 8. So f is 4 and c is 9. वो इसको सेटिस्फाई करेगा. Therefore, that option A is the answer. Remember this, whenever circle touches x-axis, the terms in x with constant forms a perfect square. And if it is touching the y-axis, the terms in y with constant forms a perfect square. Alright? Next, question 12. We are given that alpha and beta are the roots of 6x square minus 5x plus 1 equal to 0. This is a equal to 6, b equal to minus 5, c equal to 1. So what will be alpha plus beta minus b by a? That is 5 upon 6 minus of minus 5, and alpha into beta is c upon a, that is 1 by 6. Now we want tan inverse alpha plus tan inverse beta. By formula this will be tan inverse alpha plus beta upon 1 minus alpha beta, that is tan inverse of, what is alpha plus beta? 5 upon 6, 1 minus 1 by 6, that is tan inverse of 5 by 6 upon 5 by 6 will give you tan inverse 1. आंसर आएगा pi by 4. We have to find the area bounded by y equal to cos x, y equal to sin x and the y axis, and
x greater than equal to 0 means first quadrant. पहले ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. We know sin 45 cos 45 are equal. We draw the graph. ये cos x का ग्राफ है ऐसे, ये cos x का ग्राफ है और ये sin x का ग्राफ आएगा. This is, we want to find this area. This curve is y equal to cos x. This curve is y equal to sin x. And this point is pi by 4. Y axis means x equal to 0. Bounded by y axis means x equal to 0. So we want this area. This area A is A to B fx minus gx. It is area between two curves. This is 0 to pi by 4. Limits are 0 to pi by 4. What is the upper curve? Cos x minus sin x dx, जिसका इंटीग्रेशन होगा sin x plus cos x from 0 to pi by 4. We substitute the value. Sin 45 1 by root 2, cos 45 1 by root 2, sin 0 0, cos 0 1. तो आएगा root 2 1 by root 2 plus 1 by root 2 will be 2 by root 2 minus 1. आंसर आएगा root 2 minus 1. ये you know this is cos x का ग्राफ and sin x is sinusoidal curve and they will meet each other at pi by 4. So we want this area. We want area between y equal to cos x, y equal to sin x and the y axis. Means we want to calculate this area. It is area between these two curves, fx and gx. The formula is fx minus gx. So upper curve is cos x, lower curve is sin x. So sin x minus cos x is the answer. Fx is tan x minus x. We want to find fx always increases or decreases or remains constant or becomes 0. What will be f dash x? Sec square x minus 1, that is tan square x. Therefore f dash x will be, ये वैल्यू ऑफ tan square x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स f will be an increasing function. We know the condition for increasing function is greater than or equal to, greater than 0 actually. So it will be an increasing function. F will be an increasing function. That is the answer. Fifteenth, there is a bag in which there are 5 brown and 4 white socks. You are drawing 2 socks out of it. So total socks are 9. So NS will be 9C2. We want socks of the same color.
We want socks of the same color. Therefore, Na will be 5C2 plus 4C2. Either we'll get 2 brown socks. Out of 5 we can draw 2 in 5C2 ways, or means plus. Out of 4 white socks we can draw 2. Therefore, Pa will be Na upon Ns. This will be 5C2 plus 4C2 divided by 9C2. This will be 5 into 4, 4 into 3 divided by 1 into 2 and 9 into 8 divided by 1 into 2. Numerator में आएगा 20 plus 12, 32 upon 72 will become, when you divide by 8, the answer will be 4 upon 9. Answer आएगा 4 upon 9. आंसर ऑप्शंस में दिया हुआ है 48 upon 108. We know we can multiply and divide by 12. तो 12 fours are 48 and 12 nines are 108. 48 upon 108 is the answer. Sixteenth, we have to calculate the value of this integral. We take e raised to 2x common. This is ये e raised to x को ऊपर ले लिया. We'll put e raised to minus x equal to t. So minus e raised to minus x is equal to dt by dx. Therefore e raised to minus x dx will become minus dt. So integral I will become न्यूमरेटर में आएगा माइनस डी टी, डिनोमिनेटर में रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 नेगेटिव टी प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1. ऑप्शंस देखेंगे तो आंसर इज ऑप्शन सी. नेगेटिव लॉग ऑफ टी इज e raised to minus x and e raised to minus 2x. Seventeenth, eccentricity of hyperbola. एक hyperbola का eccentricity √3 है. We have to find the eccentricity of conjugate hyperbola. Given hyperbola का eccentricity √3 है, we have to find eccentricity of the conjugate hyperbola. We know this formula, 1 by e1 square plus 1 by e2 square equal to 1. So we can calculate, this is 1 by √3 square plus 1 by e2 square equal to 1. So 1 upon e2 square will be 1 minus 1 by 3, that is 2 by 3. So what will be e2 square? 3 upon 2. So what will be e2? The root of 3 upon 2 is the answer. बस सिर्फ ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि गिवन हाइपरबोला का एक्सेंट्रिसिटी E1 है और कॉन्जुगेट हाइपरबोला का एक्सेंट्रिसिटी E2 है, देन दिस इज स्टैंडर्ड हाइपरबोला x square upon a square minus y square upon b square equal to 1. This is y square upon b square minus, ये इंटरचेंज हो जाएगा. Alright, एक का E1 दूसरे का E2, then the formula is 1 by E1 square plus 1 by E2 square equal to 1.
18th. X is equal to log t. And y equal to 1 plus t square. We want d2x by dy square. तो पहले तो यहां से t को एलिमिनेट कर देंगे. ऑप्शंस देखेंगे ना तो ऑप्शंस में t दिया ही नहीं है. There is no t. Here what is the base? E. So what will be e raised to x t? So what will be y? 1 plus e raised to x the whole square. ये वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. So y will be 1 plus e raised to 2x. So what will be dy by dx? 2 e raised to 2x. And what will be d2y by dx square? इसका डबल डेरिवेटिव 4 e raised to 2x. We want d2x by dy square. Now we know the formula. It is minus of d2y by dx square upon dy by dx the whole cube. That is negative. What is this? 4 e raised to 2x upon 2 e raised to 2x the whole cube. So क्या होगा? Minus 4 e raised to 2x upon 8 e raised to 6x. तो ये 4 upon 8 will be 1 by 2.5 and e raised to minus 4x is the answer. Again, it is imperative that you know this formula. There is no need to calculate, there is no need to differentiate this with respect to y. We calculate dy by dx, d2y by dx square and use this shortcut formula. This will be easier to calculate. Nineteenth. Cos A equal to m times cos B and cot A by A plus B by 2 is equal to lambda times tan B minus A by 2. Then the value of lambda equal to, from here what will be cos A upon cos B? It will be m upon 1. We do componendo dividendo. तो क्या आएगा? cos A plus cos B upon cos A minus cos B equal to m plus 1 upon m minus 1. Now हमको चाहिए एक में a प्लस b बाई 2, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, और एक में b माइनस a बाई 2. बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या आएगा? अभी विल अप्लाई फैक्टराइजेशन फॉर्मूला. डिवाइडेड बाय 2 साइन this 2 gets cancelled. ये cos माइनस cos का दूसरा फॉर्मूला यूज किया, 2 sin sin वाला फॉर्मूला. सेकेंड d माइनस c बाई 2. दिस विल बिकम cot a प्लस b बाई 2. और ये नाउ ये cos a माइनस b बाई 2 लिखो या cos b माइनस a बाई 2 लिखो. इट इज द सेम ओनली ना. ये cos थीटा है और ये cos माइनस थीटा है, तो व्हाट विल बी cos अपॉन साइन, ये cot हो जाएगा. सो दिस विल बी cot b माइनस a बाई 2 इक्वल टू m प्लस 1 अपॉन, therefore cot a plus b by 2 will become m plus 1 upon m minus 1 times tan
ये कॉट को नीचे लिया तो 1/cot हो जाएगा, उधर जाएगा तो tan बन जाएगा. ऑलराइट, इसको कंपेयर करो ये इक्वेशन के साथ. ये वैल्यू बन जाएगा लैम्बडा. लैम्बडा का वैल्यू आएगा m+1/m-1. दिस इज इंपॉर्टेंट. वी हैव टू डू कंपोनेंडो डिविडेंडो. पहले ऐड, ऊपर ऐड, नीचे सब्ट्रैक्ट. ऑलराइट, तो इधर ऊपर m+1, नीचे m-1. और ये cos a-b/2 लिखो या cos b-a/2. इट इज द सेम ओनली. मैं b-a/2 के टर्म्स में क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसमें b-a/2 चाहिए tan. तो ये a-b/2 लिखो या b माइनस, व्हाट इज cos अपॉन sin? cot. ये cot को उधर ले लिया तो tan बन जाएगा. दैट इज द आंसर. 20. We have to find the maximum value of this function. So what will be fx sin x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. व्हाट इज sin x cos x मल्टीप्लाइंग डिवाइड बाय 2. व्हाट बी f dash x sin x का cos x एंड 1/2 2 cos 2x. तो ये आएगा cos x प्लस 2 cos square x minus 1. विल इक्वेट f dash x to 0. तो क्या आएगा? 2 cos square x plus cos x minus 1 equal to 0. Therefore, इसका दो फैक्टर्स आएगा. 2 cos x minus 1, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं. 2 cos x minus 1 एंड cos x plus 1. फैक्टराइज अभी मल्टीप्लाई करके चेक करो. 2 cos square x plus 2 cos x minus cos x and minus 1. From here, value of cos x will be half or cos x will be minus 1. Alright, from here, sin x will be √3/2. cos x अगर हाफ है तो sin x √3/2 हो जाएगा. अगर cos x का वैल्यू -1 डाल दिया ना तो ये तो 0 हो जाएगा. तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा. ऑलराइट, जब cos x हाफ है तो x विल बिकम 60. अब ये 60 इसमें सब्सटीट्यूट कर दो. तो व्हाट विल बी fx? f ऑफ π/3 विल बी sin π/3 and 1 plus cos π/3. This will be √3/2. 1 plus 1/2, that is √3/2 into 3/2, that is 3√3/4, that is 3 raised to 3/2 divided by 4 is the answer. 3√3 is 3 raised to 3/2. ये डिस्कार्डेड है क्योंकि cos x का वैल्यू अगर -1 लिया तो ये वैल्यू तो 1 minus 1 0 हो जाएगा. तो वैल्यू मैक्सिमम नहीं आएगा, मिनिमम आएगा. तो ये वैल्यू डिस्कार्ड किया है क्योंकि ये 0 हो जाएगा. ऑलराइट, सो वैल्यू cos x का हाफ लेंगे तो x का वैल्यू 60 आएगा. ऑलराइट, आंसर आएगा 3√3 अपॉन 4, 21.
we are given k times 0 to 1 x into f of 3x dx is 0 to 3 t into ft dt. Let us take I k times 0 to 1 x into f3x dx. अब इसको कंपेयर करो, जहां f3x है वहां ft चाहिए, तो 3x को t सब्सटीट्यूट करेंगे. विल पुट 3x इक्वल टू t. What will x become? t upon 3. So dx will become dt upon 3. Now we change the limits. When x is 0, t will be 0, and when x is 1, t will be 3. तो ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा? k times 0 to 3 x is t by 3 ft and dt by 3. So this will become k by 9 0 to 3 t into ft dt. अब ये इंटीग्रल को ये इंटीग्रल से कंपेयर करो, क्योंकि ये इंटीग्रल का वैल्यू ये दिया हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ पे ये इंटीग्रल के आगे कुछ नहीं है, मतलब k by 9 का वैल्यू 1 होना चाहिए. आगे कुछ नहीं है, मतलब k by 9 must be 1, so k must be equal to 9. ये इंटीग्रल का वैल्यू ये इंटीग्रल है, हमने ये इंटीग्रल को इसके टर्म्स में कन्वर्ट किया, लेकिन 1 आने की जगह पे k by 9 आया यहाँ पे, सो k का वैल्यू 9 होना चाहिए, तभी आंसर इंटीग्रल के आगे वैल्यू 1 आएगा. सो k मस्ट बी 9. ये f3x है, उसके बदले ft चाहिए, तो सब्स्टिट्यूशन यहां से मिलेगा 3x इक्वल टू t, x विल बिकम t by 3, dx विल बी dt by 3. वी चेंज द लिमिट्स, तो ये k एज इट इज रहेगा, x के बदले t by 3, 3x के बदले t, dx के बदले dt अपॉन 3, तो k by 9. अब ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल सेम है, क्योंकि इसका वैल्यू ही ये है, मतलब k by 9 मस्ट बी 1, सो k मस्ट बी 9. We are given that gx equal to f dash x, ये दिया हुआ है. We want to find integral a to b fx into gx dx, that is a to b fx into f dash x dx. We know by synopsis what is fx into f dash x. It is fx the whole square by 2 from a to b. So 1 by 2 will come out, and पहले अपर लिमिट तो आएगा fb the whole square minus fa the whole square is the answer.
Remember this as a formula. Sin x raised to m minus 2 upon cos x raised to m will become tan x raised to m minus 1 upon m minus 1. We can easily derive this. ये रेस टू एम को दो पार्ट में स्प्लिट किया, रेस टू एम माइनस 2 एंड रेस टू 2, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा. दिस विल बिकम tan x रेस टू m minus 2 into sec square x dx. This is now like fx raised to n into f dash x. This is fx raised to n. fx is tan x and this is f dash x. तो आंसर आएगा रेस टू n plus 1 upon n plus 1. Therefore n plus 1 पावर एक ऐड हो जाएगा. जब भी न्यूमरेटर में sin x का m minus 2 पावर है और डिनोमिनेटर में cos x का m पावर है, ये m minus 2 और m के बीच में आएगा m minus 1. m और m minus 2 के बीच में आएगा m minus 1. तो tan x raised to m minus 1 upon m minus 1. You can remember this as a formula. Problem 23. This is cos x raised to minus 3 by 7 into sin x raised to minus 11 by 7. This is what is important is न्यूमरेटर का पावर और डिनोमिनेटर के पावर का डिफरेंस 2 होना चाहिए. ये डिनोमिनेटर का पावर में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो न्यूमरेटर का पावर आएगा. डिनोमिनेटर के पावर में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो न्यूमरेटर का पावर आएगा. ऑलराइट, सो दिस इज नाउ लाइक ये 3 by 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो एलसीएम लेंगे तो 3 minus 14 minus 11 by 7 न्यूमरेटर का पावर आएगा. सो योर आंसर वुड बी दिस इज नाउ लाइक sin x raised to m minus 2 upon cos x raised to m. तो आंसर आएगा tan x raised to m minus 1 upon m minus 1. What is m here? m is 3 by 7. तो आंसर आएगा tan x raised to 3 by 7 minus 1 upon 3 by 7 minus 1. That is tan x raised to minus 4 by 7 upon minus 4 by 7 plus c. तो 7 by 4 हो जाएगा, minus 7 by 4. ये फॉर्मूला याद रखेंगे. न्यूमरेटर में sin x होगा और डिनोमिनेटर में cos x होगा, और डिनोमिनेटर में cos x का जो पावर है और न्यूमरेटर में sin x का जो पावर है वो दोनों का डिफरेंस अगर 2 होगा, इधर m इधर m minus 2 तो इधर m minus 1 आएगा. m और m minus 2 के बीच में m minus 1 आएगा. ऑलराइट, मैंने प्रूफ भी दिया है यहाँ पे. यू कैन यूज दिस फॉर्मूला इफ रिक्वायर्ड. We want to find the value of sine of 2 cos inverse root 5 by 3. Let us assume cos inverse root 5 by 3 as theta. So root 5 by 3 will become cos theta. So what will be sin theta? Root 1 minus cos square theta
root of 1 minus cos square theta, that is root of cos theta is root 5 by 3, तो ये 5 by 9, तो ये होगा root 4 by 9 यानी कि 2 by 3. सो sin थीटा आएगा 2 by 3 और cos थीटा आएगा root 5 by 3. आपका cos थीटा का वैल्यू root 5 by 3 आया और sin थीटा का वैल्यू 2 by 3 आया. Now what will this expression become? Sin of 2 theta ना, ये cos inverse root 5 by 3 theta है तो ये sin of 2 theta हो जाएगा. By trigonometry this is 2 sin theta into cos theta, that is 2 times sin theta is 2 by 3 and cos theta is root 5 by 3. तो आंसर आएगा 4 root 5 upon 9. आंसर आएगा 4 root 5 upon 9. Slope of lines which make an angle of 45 degrees with the line. ये लाइन L2 दिया हुआ है जिसका इक्वेशन है 3x minus y is equal to -5. तो m2 आएगा -3 upon -1 यानी कि 3. Let us assume that given line का slope is m, slope of required line. तो m1 will be m and angle theta दिया है 45. We use the formula for tan theta. Tan theta is mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. This is tan 45 mod of m minus 3 upon 1 plus 3m. So 1 is equal to mod of, therefore plus or minus 1, therefore 1 plus 3m equal to m minus 3 or -1 minus 3m equal to m minus 3. Therefore 2m equal to -4 or -4m equal to -2. So m will be -2 or 1 by 2. M will be -2 or 1 by 2. इसका इंटीग्रेशन ये दिया है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन k. ये k का वैल्यू ढूंढना है. ये व्हाट इज 1 plus tan square x x square x, so we'll put tan x equal to t. sec square x dx will become dt. So integral I will become dt upon 1 minus t square. This is 1 by 2 into 1 log 1 plus t upon, तो आएगा 1 by 2 log 1 plus tan x upon 1 minus tan x. So value of k will be 1 by 2. Value of k will be 1 by 2. k का वैल्यू आएगा 1 by 2.
tan x को t लिखेंगे, डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो फिर पाकिस्तान फॉर्मूला आ जाएगा. (27) This is the pair of line given. xy minus x minus y plus 1 equal to 0. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो x कॉमन y minus 1 minus 1 कॉमन y minus 1. Therefore x minus 1 into y minus 1 means x equal to 1 or y equal to 1, means the point of intersection will be 1 comma 1. Alright, now we are given that there is a third line which is ax plus 2y minus 3 equal to 0. We are given that these three lines, they are this is y equal to 1, this is x equal to 1, and this is L3, and they are concurrent, meeting at one point. And what is the point of intersection? 1 comma 1. So this point P1 comma 1 lies on L3. Therefore a into 1, 2 into 1 minus 3. So a minus 1 equal to 0, means a equal to 1 is the answer. A equal to 1 is the answer. (28) cos a minus b equal to 3 by 5 and tan a into tan b equal to 3. We have to find which of the options is true. This tan will become sin upon cos. So sin a sin b upon cos a cos b equal to 3 upon 1. Therefore cos a cos b upon sin a sin b will be 1 upon 3. Again we'll apply componendo dividendo, क्योंकि ये cos a minus b का वैल्यू मालूम है. What is cos a minus b फॉर्मूला? cos a cos b plus sin a sin b. तो एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे. अपॉन cos a cos b minus sin a sin b will be 1 plus 3 upon 1 minus 3. This is cos a minus b divided by cos a plus b equal to 4 upon minus 2. What is the value of cos a minus b? 3 by 5 upon cos a plus b equal to minus 2. Therefore cos a minus b, this value is given as, this value is given as 2. Tan a into tan b is given as 2. तो ये 2 upon 1 हो जाएगा, तो ये 1 by 2 हो जाएगा. तो ये 1 plus 2 upon 1 minus 2 आएगा. तो ये वैल्यू आएगा 3 upon minus 1. तो ये वैल्यू आएगा minus 3. 3 gets cancelled. So value of cos a plus b आएगा minus 1 by 5. This is the answer. In other words, we were given cos a minus b, we were given tan a into tan b, and we had to find tan a cos a plus b. तो ये वैल्यू 3 नहीं था, 2 था,
तो 2/1 का 1/2 एंड कंपोनेंटो डिविडेंडो करेंगे तो 3/-1, तो वैल्यू आएगा -1/5. सो ये सेम क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं. इफ cos a minus b is 3/5 and value of tan a into tan b is 2, find the value of cos a plus b. Then we have to do this componendo dividendo. 29th, we are given fx is 2x square minus 4x plus 1. We calculate f minus x. So f minus x आएगा 2x square plus 4x plus 1. Now we are given gx is fx minus f minus x divided by 2. तो क्या होगा 2x square minus 4x plus 1 minus 2x square minus 4x minus 1 अपॉन 2. ये कैंसल, 1 minus 1 कैंसल, आएगा minus 4x. Now we want integral -3 to 3 gx dx, that is integral -3 to 3 minus 4x dx. Now we know x is an odd function, so this minus 4x will also be an odd function. x odd है, alright, तो minus 4x will also be odd, and we know for odd function minus a to a gx dx will be 0 if g is odd. तो आंसर आएगा, इसका वैल्यू आएगा 0. यू कैन चेक दिस. ऑड कैसे होगा, x के बदले माइनस एक्स डालो तो ये -4x का +4x हो जाएगा. सो इट इज एन ऑड फंक्शन बिकॉज ऑड फंक्शन है और लिमिट्स -a to +a टाइप का है, तो आंसर 0 आएगा. क्वेश्चन नंबर 30. Question 30. Line L is x is equal to 2y. It is cutting the ellipse x square plus 4y square equal to 4 at P and Q. तो पहले तो ये 1 and 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो P एंड Q का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा. तो पुट x is equal to 2y in इक्वेशन 2. तो क्या होगा 4y square plus 4y square is equal to 4. So 8y square is equal to 4. So y square equal to half. So y will be plus or minus 1 by root 2. And what is x? 2 times y. So x will be plus or minus root 2. इसका डबल करेंगे तो 2 by root 2 आएगा. So p का कोऑर्डिनेट्स होगा P का कोऑर्डिनेट्स होगा √2, 1 by √2 और Q का कोऑर्डिनेट्स होगा -√2, -1 by √2. We want circle satisfying having this PQ as diameter. Circle which will have this PQ as diameter. So equation of circle having PQ as diameter will be x minus √2 into x minus, in fact ये x जब प्लस √2 है, ऑलराइट, और इधर x प्लस √2 आएगा एंड y माइनस 1 by √2 इंटू y प्लस 1 by √2.
ये अगर x1 y1 है, ये अगर x1, y1 है और ये अगर x2, y2 है, तो क्या है फॉर्मूला डायमीटर फॉर्म का? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। तो क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 2 एंड y स्क्वायर माइनस हाफ। तो आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 5/2। अगर ये नहीं करना है तो ये डायमीटर जो है this is P and this is Q. We want this circle. We want this circle having PQ as the diameter. तो ये जो P and Q है, they are both lying on the circle. Alright, therefore this PQ will satisfy the equation. Alright, P का coordinate and Q का coordinate will satisfy this equation और एक ही option satisfy होगा. Alright, this is the diagram. ये ellipse है, उसको ये line cut कर रहा है. Alright, and ये P है, ये Q है. एक point है first quadrant में, एक point है third quadrant में. Alright, तो ये डायमीटर फॉर्म यूज करके हम आंसर ला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बहुत सारा क्वेश्चंस किया, लगभग 30 क्वेश्चंस। ऐसा 3 और लेक्चर में ले लूंगा जिसमें we'll be doing another 30 questions which will cover almost all the topics of 11th and 12th mathematics. This will be a sort of revision. Please make the best use of your lockdown period and try to prepare very well. We don't know when the classes, lectures can be conducted now. Alright, how much time we will get after the lockdown, that we don't know. That is why it is imperative that you go on preparing, go on writing the exam and make the best use of time possible. Alright, thank you.